See, in the second question they are telling the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. Okay, we have to find the mass. Clear? So it is something related with the physics. But whenever we have to find the mass, then the formula is mass of a pipe is will they have given how much mass the wooden block is having. They have given 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram, means they have given the mass of 1 centimeter cube. So we will find the total mass of that wooden piece. That means how first we will find the volume of that wooden piece, and that volume we will multiply by 0.6 gram, so that we can get the total mass of that wooden pipe. So first they are given cylindrical wooden pipe hai, means they are having like this. An example we can say this. So they have given this as inner diameter, okay, and they are telling the inner diameter of the wooden pipe is the inner diameter. We will talk about inner diameter, so I will write a small d. Inner diameter is 24 centimeter. So if we want to find the inner radius, तो inner radius कैसा होगा? Inner radius के लिए you should know कि radius diameter का half होता है, तो inner radius will come as 12 centimeter, क्योंकि 24 को हम क्या कर देंगे हाफ, तो वी विल गेट इट 12 सेंटीमीटर. ये हमारा हो गया इनर रेडियस. देन दे आर टेलिंग कि outer diameter means this. Now I have drawn some outer part of this pipe. Okay, you can clearly see. तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा it will be outer diameter. Obviously it is big, so for outer diameter I am using the capital D here. So outer diameter is 28 centimeter. So what will be outer radius? I am using again capital R. Radius diameter का half होता है, तो it will become as 14 centimeter. Okay, so we have calculated the radius. height they have given the length of the pipe जो होगी, जो pipe की length है ये यहाँ से यहाँ तक, that is the height. So they have given this is 35 centimeter. Now we will solve it. So it's very simple to solve. So in solution what we will write, first they have given inner radius, we will write inner diameter. We have already calculated inner diameter is 24 centimeter, therefore inner radius will be 12 centimeter, क्योंकि हाफ होता है, ये इनर है, that's why we are using small r. okay, अब यहाँ पे outer लिख लेते हैं. outer diameter is equals to, they have given 28 centimeter, so capital D लिख दिया. therefore इसलिए outer radius, okay, then outer radius will be, make it single D. okay, outer radius will be 14 centimeter, इसको capital R लिख देते हैं. Now we have to find the, first we will find the volume of the pipe. So we will use the direct formula, volume of pipe. Whenever this type of pipes are there which are hollow pipe या hollow cylinder का formula हम इसमें use करेंगे. So volume of cylinder is the only one formula, that is pi r square h. पर हम इसमें क्या करेंगे, in this we will write pi as it is. okay, so let us, I'll first form the formula pi
r square h minus pi r square h. Now you observe what we are doing. जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसमें से ये वाले को we will subtract, तो obviously we will get the volume of this wood जो हमें required है. तो here in this case pi is same, तो जो हम common ले सकते हैं, plus height will be same in the both the cases, तो it will become pi h और bracket में बचेगा capital R square minus small r square. So you will put the values accordingly. तो pi की वैल्यू तो आ जाएगी 22/7 into h. h is already given there. Okay, h is given, so we will take h is how much? H is 35 centimeter. Here r square, capital R square, that means 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का square. You can write one time also unit if you want to write. Now here we can cancel 7 ones are and 7 how many are? It goes by 5s are. अब 5 into 22 भी कर सकते हैं, तो what answer you will get? 5 2 10 और ओके 1105. अब यहाँ पे देखें सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट 14 में से 12 माइनस करके स्क्वायर कर देते हैं. दैट मेथड इज रॉन्ग. आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट मेथड इज रॉन्ग. अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यू ऑलरेडी नो वन आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी. यू हैव स्टडीड दिस इन योर प्रीवियस क्लास. तो ये जो आपका ये है ये आपका ए हो जाएगा और दिस विल बिकम बी. तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे? वी विल ओपन एज 14 माइनस 12 और ये हो जाएगा 14 प्लस 12 और यूनिट एक बार में ही बाहर लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज इट इज वॉल्यूम. सो यूनिट विल कम इन सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये कैलकुलेशन ध्यान रखें. दिस विल मेक योर वर्क इजी. यहाँ पर ने आइडेंटिटी लगाई है which you have learned in previous class, a minus b, a square minus b square. recall करें, you will get it. we will apply the same thing. अब it's very easy. 110 into, आप पहले माइनस कर लें तो you will get it 2 into प्लस कर लें तो you will get 26 सेंटीमीटर क्यूब. और इन सब को आपस में you multiply, so you will get 5720 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और जब आपको ये मिल गया तो देन यू विल फाइंड द मास ऑफ पाइप. नाउ इन मास ऑफ पाइप व्हाट यू आर गोइंग टू डू वंस यू गॉट दिस. नाउ प्लीज सी हियर, वॉट एवर मास दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, उन्हें जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है विल मल्टीप्लाई दैट. ओके, तो दे हैव गिवन, ओके, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास ऑफ, कितना मास है उसका? 0.6 ग्राम. therefore mass of wooden, ये वुडन पाइप है. ओके, वुडन पाइप इज इक्वल्स टू जो वॉल्यूम हमारा निकला है. ओके, व्हाट वी गॉट द वॉल्यूम 5720 सेंटीमीटर क्यूब. वी विल मल्टीप्लाई बाय 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, we will multiply it by 0.6 पर सेंटीमीटर क्यूब. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3432 grams.
and we can convert it into kg also, और हम kg में convert करेंगे तो we know that कि कितना होता है 1 kg. 1 kg is equals to 1000 grams. So you will multiply it by, sorry, divide it by 1000. So automatically you will get the answer in kg. And please write the last line. Thus the mass of the wooden piece, a given wooden piece, is 3.432 kg.